Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is a SST Edupedia and I am Assistant Professor Namrata Singh. Today we are going to learn about the new concept, that is a team building and team development under the organization behavior subject. So, what is the teams and groups? People often use the words groups and teams interchangeably. But there is a difference between the teams and groups. It is commonly thought that groups and teams are the same and that they are the only spelled differently. So, are you part of team or are you part of group? So, ये images देख के हम समझ सकते हैं कि there is a difference between the team and there is a difference between the group. So what is a group? According to Marvin Shaw, a group is two or more persons who interact with one another such that each person influences and is influenced by the other persons. It means what? यहाँ पे एक person दूसरे persons को influence करता है और जहाँ पे group में two or more persons एक साथ interact होते हैं. Now, what is a team? What is the difference in the group and team? So, a team is defined as a group of people who perform interdependent, जहाँ पे both are एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे? डिपेंडेंट होंगे. बट ग्रुप में कोई भी पर्सन किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है. टास्क to work toward accomplishing a common mission or specific objective. In a team, every member is focused on the common mission or specific objective. But whenever we are talk about the groups, where persons have their own specific objectives. So, what is the difference between the groups and teams? So, in the groups, goals are not consistent or clear among the people. But whenever we are talk about the teams, their goals are clear and consistent among the group members. In the groups, roles and responsibilities not defined, but on the same times in the teams, roles and responsibilities clearly defined to the members of the group. Then whenever we are talk about the rules and expectations, so in the group, rules and expectations are not clear, so many of time there is a conflicts or misunderstanding is created between among the members. But on the same time in a teams, rules and expectations are cleared among the member. In the groups, collaboration not guaranteed. One or two members may do bulk of work and others are enjoying their space. But in the teams, members collaborate and divide labor to achieve goal. It means यहाँ पे team spirit होगा along with the division of work. But in the group, division of work नहीं होता है. So जहाँ पे एक या दो members work को seriously लेते हैं and they are doing the work in a bulk. So this is the basic difference between the groups and teams. कि in a groups many of times goals clearly मेंशन नहीं होते हैं या फिर कंसिस्टेंट नहीं होंगे. बट ऑन द सेम टाइम्स अगर हम टीम की बात कर रहे हैं, सो टीम में गोल्स क्लियर होंगे एज वेल एज कंसिस्टेंट होंगे. फॉर एग्जांपल हम क्रिकेट की अगर बात करते हैं तो वहां पे गोल्स क्लियर होता है क्या कि हमें मैच जीतना है. सो वहां पे हर एक प्लेयर की, वो बॉलर रहे या फिर बैट्समैन रहे, दोनों को क्या करना है? अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना है, जहां पे दोनों के रोल्स को क्लियरली डिफाइंड किया जाता है. सेम लाइक दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मैच उनके लिए जो रूल्स होते हैं वो रूल्स हर एक प्लेयर क्या करेगा? फॉलो करेगा. ऐसा नहीं है कि वो कैप्टन नहीं है तो उसके लिए डिफरेंट रूल है और अदर मेंबर्स के लिए अलग रूल है. और यहाँ पे हर पर्सन अपना क्या करता है? कंट्रीब्यूशन देगा और वो कंट्रीब्यूशंस के थ्रू अगर कोई भी कंट्री या कोई भी टीम मैच जीतती है तो उसका जो रिवॉर्ड्स है सारे मेंबर्स में क्या होगा? शेयर्स होगा. बट जब हम ग्रुप्स की बात करते हैं, ग्रुप्स में रिवॉर्ड्स ऑलवेज इंडिविजुअल्स को मिलता है. Now we are going to comparing the groups and teams.
whenever we talk about the roles and responsibilities in the groups, individual responsibility is not explicitly defined. Means what? यहाँ पे blame game होता है. अगर एक ने वर्क टाइम पे कंप्लीट नहीं किया तो वो ऑलवेज दूसरे पर्सन को ब्लेम करेगा कि ये वर्क हमें ग्रुप में करना था, दैट्स वाई ये वर्क इनकम्प्लीट था. बट whenever we are talk about the teams, their roles and responsibilities क्या होती है? ऑलवेज क्लियर होगी. जहां पे एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द एम्प्लॉय, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर क्लियरली डेवलप्ड एंड डिस्कस्ड अमंग द मेंबर्स कि किसका क्या रोल है, किस टाइम पे कौन किससे रिपोर्ट करेगा, किसे क्या टास्क कंप्लीट करना है, ईच एंड एवरीथिंग वहां पे क्लियरली मेंशंस होती है. Whenever we are talk about the rules in the groups, often not written down or formally developed, rules evolve depending on the group's need. It means what? यहाँ पे formally कुछ भी mention नहीं होगा. Groups जैसे चाहेंगे according to that वो rules and regulations को क्या कर सकते हैं? Modified कर सकते हैं. But in the teams, rules and operating procedures are clearly identified to help the team work efficiently and effectively. यहाँ पे हर एक situations में, situations कुछ भी होने दो, rules and regulations always consistent होंगे, वो as per the needs and wants of the members कभी भी change नहीं होते हैं. Now goals. अगर एज पर द ग्रुप गोल्स की हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो भी गोल्स होते हैं जनरल टर्म्स में उसे ग्रुप अमंग द ग्रुप मेंबर्स डिस्कस किया जाता है. बट सेम टाइम पे इन द टीम्स जो इनके गोल्स होते हैं वो स्पेल्ड होते हैं और ऑलवेज फोकस किया जाता है कि टीम को क्या करना है और क्या नहीं करना है. दैट इज अ डज एंड डोंट. देन लास्ट वन इज कम इन दिस मेथड. In the group members may or may not decide to divide the work among the group members. उन्हें लगता है कि सिर्फ 2 जन कर सकते हैं, सो वो 2 लोग ही उस टास्क को कंप्लीट करेंगे. अदर्स मेंबर्स उसमें क्या नहीं होंगे, बॉदर नहीं होंगे, अपना एक्टिव पार्टिसिपेशंस नहीं दिखाएंगे. बट सेम टाइम्स इन द मेथड्स हम जब टीम्स की बात करते हैं, सो टीम मेंबर्स के बीच में डेवलप्स होता है क्लियर मेथड्स कि किस तरीके से उन्हें वर्क करना है, उन्हें कोऑर्डिनेशंस कैसे मेंटेन करना है, हर मेंबर का एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशंस कैसे होगा और ऑन दैट बेसिस एट द एंड दे आर अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस इज द बेसिक्स डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स एंड टीम्स. Now the next concept is come in this, that is the types of teams. Now teams is divided into basically in the 4 parts. The first one is come problem solving team. Second one is come in this self managed work team. Then cross functional teams, and the last one is come in this, that is the virtual team. Now what is the self managed team? In short, self-managed teams are the groups of 10 to 15 members who takes the responsibility of their former supervisor. So they are relatively autonomous team whose members share or rotate leadership responsibilities and hold themselves mutually responsible for a set of performance goals assigned by higher management. Then they are usually cross-functional in the membership makeup. They can manage themselves, plan and schedule the work and take action on the problem. So, self-managed teams are given the authority to implement their solution and are held responsible for the outcomes of their decisions. Next one is coming this, that is a problem solving team building. So what is the objective behind the problem solving teams? Before this we will learn what is the problem solving teams. Problem solving teams are basically group of the 5 to 12 employees from the same department who meet for a few hours each week to discuss ways of improving the quality, efficiency and the work environment.
So the basic objective behind the problem solving team building is to train integration team to solve complex and different problems in a structured and openly interactive way. Structured means what? वहां पे उनके सारे rules and regulations, सारे contents पहले से फॉर्म्ड होंगे, अकॉर्डिंग टू दैट वो उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. देन टू इंट्रोड्यूस अ कल्चरली न्यूट्रल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच वेयर ऑल आइडियाज आर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन क्राफ्टिंग द सॉल्यूशन. इट मीन्स वो सारे आइडियाज को सेम वेटेज देंगे. इट शुड नॉट लाइक दैट कि एक ही आइडियाज को वेटेज देके उन्हें प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है. देन नेक्स्ट कम इन दिस to build respect for the contribution of individuals and hence the power of the team to generate new and creative ideas. It means what? सभी opportunity मिलेगी every members को जो वहां पे अपने views suggestions को रखेंगे जिसके basis पे वो problems को solve कर सकते हैं. After that next comes in this, that is a cross functional teams. Now what is a cross functional teams? In cross-functional teams, employees from about the same hierarchical level but from different work areas come together to accomplish the task. For example, सारे CEO हैं या फिर सारे क्या होंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट या कोऑर्डिनेटर होंगे, बट उनका हायरार्की लेवल सेम होगा बट वो डिफरेंट वर्क एरिया से होंगे. जैसे कोई मार्केटिंग से होगा, कोई सेल्स डिपार्टमेंट से होगा, कोई एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट से होगा, बट एट द एंड उनका जो टास्क है वो टास्क को इन अ ग्रुप एक साथ मिलकर क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे. देन सच टीम्स आर यूजुअली कंपोज्ड ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्पेशलिटीज एरियाज विद द ऑर्गेनाइजेशन. और इसमें जो भी मेंबर्स होंगे वो डिफरेंट स्पेशल एरियाज से होंगे, लाइक एज अ अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, advertisement department, production department and from the other departments. And the last one is come in these, that is the virtual teams. What is a virtual teams? A virtual team is a group of workers who communicate and work together using digital tools such as computers, internets and other things. While they can be located in the same physical space, virtual teams are often distributed, working remotely in different parts of the city, state or country, even on the other side of the world. So in the virtual teams, communication takes place online in the form of emails or video conferencing. So although virtual teams have become very popular, they face the certain challenges. Many of times studies find out that there is a less social rapport in the virtual teams. Then it has also been found that while virtual teams are good in sharing unique information, overall they share less information. So here teams uses the computer technology to tie together physically dispersed member in order to achieve a common goal. And there is some measures that management of the organizations can take to improve the effectiveness of virtual teams are: create trust among the team members, publicizing the efforts and outcomes of the team so that the team does not become invisible. So these are the different types of the team, and as per the different types of the team, people are work in the organization. Thank you.